अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ, समय ज्यादा हो गया है। धन्यवाद सभी। धन्यवाद पवन, धन्यवाद। Professor Clooney, you could now please begin your. Can you hear me now? Yes, very clearly. Okay. So, sorry for the trouble with the audio. I begin by saying that I am very grateful for the invitation to be part of this session this morning, this evening, because I understand and appreciate how important Professor Dharampal's work is. And I appreciate the bringing out of his works in collected volumes. I am also glad to connect again with the Center for Policy Studies. As Dr. Bajaj says, we go way back, at least 30 years at this point. And I'm happy to connect again with Professor Bajaj, Professor Srinivas, Varadarajan, and other friendly faces on the screen. So I am glad to be with you this morning. And I think it was in context of my first initial conversations at the Center for Policy Studies in Mylapore somewhere, where the fact of this book that was coming forth came to my attention. And I was very honored and grateful, as Professor Bajaj said, to receive the first copy when the book came out in '93. I happened to still be in Madras, Chennai at that point. And I think I was really impressed by the book because it seemed to me that what Professor Dharampal was doing in his work was what scholars need to do at various times. He is a well-known historian, well-known writer on critical issues, including Gandhiji. But I think he realized at a certain point in his life that he had to step back from a very narrow audience and speak to a wider audience about the problems facing the country today, facing a civilization in the 20th and of course now the 21st century. And I appreciate the courage he took in writing this small book, Bharatiya Chitta Manasa and Kala, because it's not easy to write a book that raises large issues without being criticized for doing so, for missing this, missing that point. But I think he was doing the absolutely essential work. And that is why I put together, to call attention to the book in the Western academic audience, the issue of the Journal of Hindu-Christian Studies, I believe 1995 issue, with a number of distinguished scholars participating. Professor Lance Nelson from the University of San Diego, Professor Anantanand Rambachan from St. Olaf College, Professor Nilima Chitkopekar from Jesus and Mary College in Delhi, and Father Anand Amoladas in Madras. And they all took the book very appreciatively. They appreciated the points that Professor Dharampal was making, and they naturally raised their own points of criticism, that if the Western caricature, too easy representation of what India and Hinduism and Indian traditions are about is not acceptable, then how do you replace that? How do you get at the Indian sense of consciousness, of mind, of time, and so on? But it was a robust conversation that I think stands up well even nearly 30 years later. And I've gone back to look at it in the past few days. So I think there is a certain solidity to the book that has stood the test of time because it raises questions that have not yet gone away. So on the one hand, there is the obvious problem of dealing with Orientalism, the odious heritage of colonialism, and the way in which the British and other foreign scholars and foreign governors and so on took it upon themselves to decide what India was really about, often with very limited knowledge and with bias and motivations that were not pure, rather characterizing and caricaturing a civilization. The time came for a needed pushback. And related to that, but distinct, the enormous tradition of Indology. And Professor Dharampal in the book goes into this in some length, that from the 18th century on, we have this incredible range of scholars, Orientalists, Sanskritists, historians,
anthropologists, Western scholars seeking to understand India and understand the Hindu traditions. And this is sort of an unprecedented phenomenon, that enormous body of literature at distinguished universities like Oxford and Cambridge and Paris and Harvard in the United States, Columbia, and so on, studying India from the outside. And the predominant voices were those of scholars from the West who did not identify with and did not wish to be identified with being Indian or being Hindu, doing all this work about Indian history, Indian archaeology, Indian textuality, the meaning of the Rig Veda, the meaning of the Upanishads, and so on. A very peculiar situation that I think Christian scholars in the West could not imagine if most of those studying Christianity were Indian or Chinese or from Africa. It would be incomprehensible, and yet this has happened. And I think what was bold about the book was that Sri Dharampal was able to push back in a constructive fashion, not simply by saying things should be different, but by trying to characterize how one can think differently. I was consulting in preparation for today the book that Gita Dharampal, Professor Dharampal, prepared of the essential writings of Dharampal from a few years back, which is a handy small book that will now perhaps be replaced by the book that has come out. But nonetheless, it was a handy book to see the work of Professor Dharampal over the years and the importance of that, and the need, therefore, to step into the conversation with Western scholars, no longer as merely trying to imitate Western scholars, no longer trying to be given attention and gain some hearing in the West, but rather to say, well, we Indian intellectuals, we South Asian Hindu intellectuals are your peers. And we have a long intellectual tradition. We are recovering that tradition, and we need to be able to speak to scholars from the West, not as subject matter, not as objects of the study of Indologists, but rather as peers talking about issues in the same conversation. And again, this goes back to my first point, that the Center for Policy Studies in all its writings over the years, I think, has tried to create this conversation, be it a book on Gandhi's Hindu Swaraj, or on the demographics of India, or on food and generosity in the Indian tradition, again and again trying to establish credible intellectual standards and work that stand up quite well in the context of the Western Academy. And I applaud this, and I applaud the book even 30 years later, that it has stood the test of time. Well, I have a few updates about the modern situation, and I'll just say briefly before that, one of the most positive contributions, I think, of the book is this recovery of the notion of shiksha. What does it mean to be educated? And I think the standards of academic understanding at universities is in a highly problematic moment. There's a certain kind of professional training, training for business, training in the sciences, training even in philology, archaeology, and so on, that falls short of the humanistic education that is needed. And this is an issue not simply in India, but throughout the world, including my own university, Harvard University. So his terms of prajna, shila, and samadhi, or as he renders them in English, right intellect, right conduct, and right education. And these seem to me to be timely categories that we all need to be aspiring for, because the intellect is absolutely essential, and we cannot tolerate a kind of a fundamentalist or simplistic approach that says we already know everything and have nothing to learn. But nonetheless, that has to be connected to the issues of ethics and morality, right ways of conduct, right ways of living. And this leads to a deeper understanding of contemplation. So samadhi is right contemplation, a deeper sense of the spiritual that I think follows from the first two. And I think it is quite possible, and increasingly possible, even in the Western academies, such as the American Academy of Religion, to start asking scholars to be more what we in the West call scholar practitioners. And to say that what you study
should in some way be accountable in terms of how you live your life, and also what larger spiritual realities you open up through your study. And the idea of the entirely objective scholar who simply does worthy, very important Orientalist Indological research is not to be scorned, but nonetheless there is more at stake. And I think Sri Dharampal points us to that. I would conclude by a few points about now, so 30 years later, and the opportunity of being invited to speak today has forced me to think about the current situation. And I would say that there's a very great way in which the situation is much better today. That in the academy in the West, at Oxford, at Cambridge, at Harvard, other universities, at meetings like the American Academy of Religion, it would almost be unthinkable now to have panels of scholars from the West, of the West, even very good scholars, without any voices from South Asia, be they directly from South Asia or born in the US, born in the West, not because we simply judge by skin color or by accent, but rather by saying there are different perspectives at work. And if you only have a scholar of white men, let's say, then something is missing. And I think that's becoming more and more standard. And I think that is a valuable point for us to appreciate and to look for a common ground across the boundaries. It strikes me also that there is an urgency to what Sri Dharampal is saying in the book when there are people who try to revive Hindu identity, a sense of Hindu culture, without doing the hard work of remembering the past. And so the lovely balance in Professor Dharampal's work is that he did know the past and did know history and knew its complications and wanted to speak in the 20th and now 21st century. And there are those, it seems, again, not only in India, but everywhere in the world, who want to posit a new identity, who want to posit the timeliness of their culture or faith or religion without any sophisticated clue about the past, without even reading the text that they pay lip service to. And I think the balance of his work to bring the intellect and morality and spirituality together reminds us that revival is a very big and hard obligation that needs to be carried out in a very good way. He says near the end of the book, for every civilization, there comes a time when the people of that civilization have to remind themselves of their fundamental civilizational consciousness and their understanding of the universe and of time. From that basis of that recollection of the past, they then define the path for their future. And I think those words strike me now because it is urgent for people of South Asia and India and Hindu traditions to do that. But it's also a crisis in the West. And I'm sure you're all paying attention to what's going on in the West with our politics, in the United States with divisions in the culture, with threats to democracy, with demagogues taking over the government in certain places, that there is a sense in which the West needs to come to terms with, can it maintain its civilizational roots or recover them, or simply live by posturing and making fairly shallow claims about what it means to be American or what it means to live in the contemporary world. In particular, I think, I think we have to be, in a sense, grateful today to say that the United States is no longer simply a Christian country, but rather an increasingly pluralistic country where many voices have to be heard. If there is simply an ignorance of the Christian past and an ignorance of the roots of American democracy and values that do have Christian distinct perspectives, if we forget all of that, then we will not even be a good pluralist country where everyone is welcome. And so it strikes me now more than 30 years ago is that Professor Dharampal in the book is really speaking, yes, to his compatriots of India and South Asia, but he's also speaking now to the rest of us. And that the problems that India is facing now, as in the last 20, 30, 40, 50 years, are problems that we Americans have to face
about how to remember the past and live in the present, how to be solid intellectuals who do academic work without excluding ethics, without excluding the spiritual, and how to put this together, all together in a way that gives a certain soul back to American civilization. And my final point then would be that I think what Professor Dharampal is doing in the book, as we think of it today, is a kind of prophetic role, not simply for India or South Asia, and not simply to be borrowed by us in the West, but a global problem of learning to be a civilization that cuts across the global boundaries, where we all have to be able to stop colonizing, stop imperializing, stop demeaning each other's cultures, but together figure out ways to be intellectually informed, morally righteous, morally responsible, and spiritual beings at the same time. And I think in the future, this will not be done by India in its own way, by the United States in its own way, by China in its own way, but we have to have conversations that cut across all of these boundaries if we are to make sense of the world in the 21st century. So with that comment, I will stop, and thank you all for inviting me to be part of this wonderful conversation at the release of the volumes today. Thank you very much. Thank you, Professor Clooney, for you have imparted depth and meaning to this deliberation today. Thank you also for agreeing to join us at a time which is very early for you in the morning. Thank you. No problem. Thank you. Thank you. I'll request now Professor Varadarajan, again a very dear friend of ours, and to say a few words. He'll be the last intervention of the day. Professor Varadarajan. Is it okay? Yes, perfect. I offer my pranams to everyone. Let me begin with the Purva Paksha. And then I will come to the response and the Siddhant that emerges from the book Bharatiya Chitta, Manas and Kal. Hegel, the German philosopher, is very important for us to understand the modern thought, the modern philosophy, which is shaping the world today. I remember having read Gandhiji making a remark that Europeans have the habit of writing the history of other nations. But long before Gandhiji, Hegel justifies this European endeavor, that Europe and the scholars there have the right, or the moral right, obligation to rewrite the history of the world, to rewrite the history of the Asian nations. To be more effective, let me quote Hegel. European horizon transcends all Asian horizons. Asian thought is comprehensible and interpretable within European thought, but not vice versa. The question of an adequate standpoint of evaluation and comparison of different cultural traditions has been decided by the course of history itself, and it has been decided in favor of Europe. European thought has to provide the context. It has to provide the categories for the explorations
of all traditions of thought. This was Hegel. We all know, maybe the idea was there earlier, but he was the one who articulated this view that history follows the linear path. It is the same thing to say that time also follows the path of linearity. Thereby meaning that you cannot go back in time. You cannot roll back history. You have to keep moving forward. And that is the only way for progress. Both Hegel and Karl Marx agrees with Hegel. They have something to say on India. Karl Marx has written 4 articles on India. Hegel, based upon the papers that were available then, he makes one very observation in India. He says it may be that people take a romantic view of the ancient India, but I don't see any meaning in that. I don't see any relevance in that. If at all, the ancient India is a showpiece that should be kept only in the museum. Karl Marx also takes a very similar position. He says, you look at the Indian villages. What was the situation 1,000 years back? It remains the same even today. The time seems to be at a standstill as far as India is concerned. Nothing seems to be moving. There is no progress at all. And he makes a remark that it is good the British have come into contact with the Indians, and it is good that British have conquered the Indian mind, because that is the only way India can move forward and achieve human progress. This is the Purva Paksh. Dharampal ji does not make any direct reference to either Hegel or Marx. But he mentions at quite some length about the Indian elite who seem to share the views of Hegel and Marx, even though they don't invoke their names. Because whenever they meet Dharampal, they would ask the question, why are you stuck with the 18th century India? We are already in 20th century. We are moving towards the 21st century. Now, what is the big point in talking about the past? What is the big point in talking about 18th century? You seem to be stuck with that. This is a standard conversation you would come across whenever you would meet the political elite or the intellectuals or educated elite of India. Now, Dharampal ji comes up with a response to this understanding, to this formulation. The point he makes, I will put it rather crudely, is that changes are there. They are constantly happening. But they don't overwhelm the Indian mind. Because there is a strong continuity. And this continuity is very profound in the making of the Indian psyche, in the making of the Indian mind, in the way they comprehend the world. So whatever comes that is something new, they would not accept it as they are, but they would like to adapt based upon their own cultural and other ethos. Let me give 1 or 2 examples. We all know that Pandit Jawaharlal Nehru was out and out a modernist. He was very uncomfortable with everything that was Indian. Actually, the whole idea was to completely dismantle Indian society and restructure it the modern way. And whenever there is a reference to Pandit Jawaharlal Nehru,
people would refer to him as the modern architect of modern India. But what Dharampal says, I will quote one example because this example is not known to many. Recently, the Tughlaq magazine has documented this event, so it may be worthwhile to mention about that. At the time of independence, Lord Mountbatten asked Jawaharlal Nehru, now that the power has to be transferred, will you please tell me what is a formal way of transferring power to India? Nehru did not know, and he was at a loss. What is the procedure to be followed? Then he asked Rajaji, how do we go about this? Rajaji in turn asked the Adinam of Tiruvadurai Adinam Mutt, a Saiva Mutt in Tamil Nadu. And the Adinam, the head of the Tiruvadurai Mutt, he said, the ancient method, the ancient way is, at the time of handing over power, this, it is called Sengol in Tamil. What? Rajadanda. Huh? Rajadanda. Rajadanda or Dharma Rakshita, etc. The English word is scepter. And that should be handed over to the new incumbent. And there will be some invocation of God and other things. And that will be the way the ceremony will be conducted. So the chief Adinam could not come because of his fever, but the second in command and scholars from the Adinam had come. And there is a photograph. That is a document published in this book. That Dharmadanda is now kept in the Ananda Bhavan. So what is happening, the ceremony is, this Dharmadanda or this one is received from Mountbatten. It is purified with Ganga water. Then it is handed over to Jawaharlal Nehru. Now if you look at the photograph, Pandit Jawaharlal Nehru, despite all the modernity, and he was very, very, very keen that he should also appear to be so. But in this particular incident, he was so comfortable at home and very happy and is extremely satisfied to receive this Rajadanda, and he holds it with all the pride. And a shawl is now offered to him. And the scholars who had come all the way from Tamil Nadu, they recite a Saivite poem which eulogizes the importance of Dharma, the importance of the king and all that. So that ceremony, handing over the formal transfer of power to India, to Jawaharlal Nehru, was done in the most traditional way. So when Dharampalji says even a person like Pandit Jawaharlal Nehru could not escape the innate Indianness that was inherent in him, that however much he would like to appear as a very modern man, and he would like to transform India in terms and images of Western modern idiom and phrases, but even he ultimately takes recourse and ultimately feels so comfortable in the most traditional ancient way of receiving power, etc. Now Dharampalji makes another very interesting remark in the book, that Christianity is trying to make inroads into Hinduism, but Christianity is also getting Hinduized. Now, what is the meaning of that? That Indians, see, you cannot bring Christianity in terms of Western formulation or framework and simply impose it on Indian people. And they may accept it, but even those who accept it, they may accept it only on their own terms and conditions. That is what is happening to Christianity, at least I see it in the southern part of India. So what Dharampalji is trying to hint at is that yes, but ultimately what will emerge is the Indian version of Christianity. Now, Professor Clooney made a remark in his concluding thing that there has to be a dialogue across the countries, across the
traditions, across the religions and all that. But my own feeling is, in India, where you have a presence of all the religious communities in good number, I think it provides a very fertile ground for inter-religious understanding, which should happen. I don't want to go further into that. Only one more observation I will make, because the time is running out. It has. Once I asked MD Srinivas, since he is working on Kerala School of Mathematics, Indian Mathematics, I am an outsider to this subject. So I asked him, what is this Indian mathematics all about? People are talking. Then he said, there is nothing called Indian mathematics. He said, the correct way of framing the question would be, how would the Indians would do mathematics? That is a more proper way of asking this question. I will refer to one more thing. In 1941, Vardhan, could you please conclude? The time is running out. Everybody is leaving. because I am the last speaker, I can. No, then, Joshiji. Joshiji is That is the advantage I have as a. Joshiji is to do the conclusion. No, I will take only 2-3 minutes. The Education Department Ministry initiates the subject, the project. How do people think in China, India, Japan, and all that? Nukumara has brought out it as a book. There he makes remarks that Indians are given to textual thinking. Maybe he was trying to convey that Indians are not given to empirical thinking. But what we find when you discuss about consciousness in Indian Vedantic literature, the consciousness is not about the subject. The whole discourse is not about the sabda. It is not about the text. But the consciousness question that is debated, discussed, is only about pratyaksha. How do we perceive the world as it is, without the intervention, distortion of the mind and the sense organs? Now, this pratyaksha is the empirical understanding of the world. I think Dharampalji's earlier works depends upon data, empirical observations, informations, etc. Whereas in Bharatiya Chittamanas and Call, he is trying to explore the theoretical mind of Indians. What is the Indian theoretical mind in terms of the text, in terms of the literature? Now, what I would conclude by saying that if you want to work out an India's world view or Indians' view of the world, probably both the traditions are important. The textual tradition is important. At the same time, the pratyaksha, the empirical understanding of the world is equally important, and which is there in the Indian tradition, I think, with equal emphasis. Pratyaksha is not dismissed in favor of sabda. Pratyaksha is, all consciousness debate is more about pratyaksha only. It is not only about the reality of the Brahman, it is about the reality of the world. So I think this combination, a theoretical understanding, but not only that, but an empirical understanding of the world, I think this is extremely important if you want to work out an Indian understanding of the world with this, because there are, now he is relying more on Indian ancient text to understand the theoretical mind. Earlier books were more concerned with the empirical information, data, and things like that. I thought that these two things are extremely important in our Indian tradition, and I thought I would just make a mention of these two. Thank you, Vardhan. I'm sorry for stopping you. It's late in the evening and Joshiji is waiting. I'll just request. माननीय जोशी जी, थोड़ी देर हुई है, आप अपना समारोह प्रारंभ करें. धन्यवाद. वैसे तो पूरे दिन भर की चर्चा में इतने स्वरूपों में और इतने हलकों पर, इतने आयामों में धर्मपाल जी के साहित्य पर, उनकी दृष्टि पर सुनने को मिला है, और उससे मेरे लिए बहुत कठिन
परिस्थिति आपने उत्पन्न कर दी है। सामान्य तौर पर अंतिम वक्ता के लिए कुछ शेष नहीं रहता है, खास तौर पर जैसी आजकल परिपाटी है, उसमें सब कुछ हो जाने के बाद कई बार तो ये कहा जाता है ना कि अंतिम वक्ता के लिए लोग इसलिए रुकते हैं कि कोई और दरी उठाने वाला नहीं मिलता। लेकिन यहाँ बात उल्टी है, और अंतिम वक्ता के लिए इतनी अधिक सामग्री परोस दी गई है कि उसमें से वो किसका चयन करे और किसका ना करे। इसलिए मैंने ये थोड़ा विचार किया कि बजाय इसके कि पुस्तक के विषय में या उसमें संकलन की गई तथ्यों के बारे में ज्यादा न कहा जाए, बल्कि जो दृष्टि उससे हमको प्राप्त होती है उसके बारे में कुछ संक्षेप में आपके सामने कुछ विचार रखूं। पहली बात तो यह है कि भारतीय चिंतन परिपाटी में तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात मुझे मेरी समझ में आई है वो तो प्रश्न है, मैं नहीं जानता, कौन जानता है। वेद कहता है, उसमें सवाल उठता है कि ये पृथ्वी कहाँ से आई, तो उत्तर मिलता है जल से आई। जल कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा ये वायु में से आया। वायु कहाँ से आई, अग्नि में से आई। पूछता है फिर ये किसने बनाई, ये अग्नि कहाँ से आई, वो कहाँ से आई। कहता देखो ऐसा है भाई, इसका तो कोई अंत नहीं है, लेकिन असली बात यह है कि मैं इस बात को नहीं जानता। कौन जानता है, तो शायद जिसने सृष्टि बनाई है वो जानता हो, लेकिन फिर कहता है पता नहीं वो भी जानता है या नहीं। यदि वेद यदि मानते, ये मूल है वैदिक दृष्टि का, जिसमें प्रश्न, शंका और उत्तरोत्तर इस बात की चिंता करना कि भाई कहाँ जाना है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं ना कि ये वेद में कहा गया कि नेति नेति कहीं गावी वेदा, तो इसमें नेति नेति का अर्थ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि यही इति नहीं है, यही केवल इति नहीं है, ना इति, या इसका दूसरा अर्थ है कि इति यहाँ समाप्त नहीं होती, इसके आगे भी और है, सितारों के आगे भी और भी जहाँ है। तो मूल वृत्ति इस देश की जिस समय से बनी, विकसित हुई, आगे गई, उसका जो बीज है उसको मैं समझता हूँ वो इस प्रश्न से निकलता है कि कौन जानता है, किसने बनाई, वो जानता है या वो भी नहीं जानता है। अब इससे बड़ा मैं समझता हूँ कोई चिंतन का इतना बड़ा फलक आपको किसी और दुनिया के साहित्य में, दर्शन में, मेरी दृष्टि में तो नहीं मिलता है। यदि किसी के पास इससे आगे का कोई प्रश्न हो और उसके समाधान के बारे में किसी ने चेष्टाएं की हो, किसी समाज ने या किसी उसने, तो शायद इसलिए ये बात समझने की है कि हमारी दृष्टि कहाँ से खड़ी होती है। हम सामान्य तौर पर कठमुल्ला नहीं बन सकते, हमें तो सवाल चाहिए का जवाब चाहिए। और ये बार बार हमारे इतिहास में दिखाई देता है, हमारे ग्रंथों में, हमारे कथानकों में, हमारे उपनिषदों में ये बात बार आती है। इसमें मैं कई बार अष्टावक्र का उदाहरण देता हूँ। इससे बड़ा शायद प्रश्न करने वाला कोई समाज आपको मिलेगा नहीं। अष्टावक्र के पिता कहोड़ मुनि
बता रहे थे, अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, कुछ वेद मंत्रों का अर्थ बता रहे थे। और अष्टावक्र की माता जी वो भी वहाँ सुन रही थी और अष्टावक्र उनके गर्भ में थे। पढ़ाते पढ़ाते कहोड़ मुनि को एक ध्वनि आई कि पिताजी आप गलत पढ़ा रहे हैं, पिताजी आप गलत पढ़ा रहे हैं। उनका यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, सारे जो शिष्य हैं वो शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं। उनका शायद मेरा भ्रम होगा। तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और वही बात जो वो गलत पढ़ा रहे थे, अशुद्ध पढ़ा रहे थे, उसको उन्होंने कहा कि पढ़ाने लगे। तो फिर आवाज़ आई, थोड़ी जोर से आई, तो पिताजी आप अशुद्ध पढ़ा रहे। तब उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई है नहीं, अच्छा ये जीव जो मेरी पत्नी के गर्भ में है शायद ये मुझको टोक रहा है। बड़े नाराज हुए, कह रहे तू वहां से अभी मुझको टोक रहा है, जा तू इतना टेढ़ेपन की बात करता है, जा 8 जगह से टेढ़ा हो जा, इतना टेढ़ा है तू। और वो 8 जगह से टेढ़ा हो गया और जैसा हुआ वो सब जानते हैं उसको। लेकिन ये बालक तो पिता से वेद सुन के और सारी मंत्र सुन के और आख्यान सुन के पैदा हुआ था, तो मस्तिष्क में तो उसके सारा ज्ञान भरा हुआ था। आगे बढ़ गया, पहुंच गया कभी जनक जी के दरबार में। तो उसने दरबार ने कहा कि यहाँ कहाँ पा गया, यहाँ तो विद्वानों को बुलाया जाता है, ये तू कहाँ आ गया भाई। उसने कहा अच्छा मैं भी देख लेता हूँ। बोले यहाँ बड़ा कठिन दंड है कि अगर तू यहाँ कुछ नहीं किसी को भी वो कर पाया, समाधान नहीं कर पाया, तो तुझे जल में डुबो दिया जाएगा। उसने कहा ठीक है चलते हैं। गया, उसने द्वारपाल ने कहा राजा से कि महाराज ये आया है और कहता है कि मुझे शास्त्रार्थ करना है। लाओ भाई, कौन? अरे ये कौन है? उसने कहा भाई बालक तू यहाँ आ गया है, क्या करेगा यहाँ, तो इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे। तो जैसे ही ये अष्टावक्र आगे चले तो लोगों ने, पंडितों ने, महापंडितों ने, विद्वानों ने उनकी वेशभूषा और शरीर की नक्शिक और उनका बांकपन, टेढ़ापन देख के कहा, हंसने लगे। तो अष्टावक्र ने कहा महाराज क्षमा करें, मैं तो समझता था कि यहाँ पंडितों की सभा होगी, लेकिन मुझे तो सब यहाँ चर्मकार नजर आते हैं जो केवल मेरा चमड़ा देखकर, मेरा रंग देखकर ही बारे में निर्णय कर रहे हैं। तो ये जो एक दृष्टि थी कि प्रश्न और फिर उस प्रश्न को दूर तक ले जाना और फिर यहाँ तक पहुँचना, और कथा लंबी है लेकिन तात्पर्य यह है कि कोई भी हमारे देश में मस्तिष्क को बंद करके चलने वाली प्रथा नहीं। बालक भी है तो वो प्रश्न कर सकता है, वो चैलेंज कर सकता है, और वो केवल ईश्वर है या नहीं इन प्रश्नों पर ही चैलेंज नहीं करता, लेकिन वो तो मूल अस्तित्व पर ही चैलेंज कर देता है। आप हैं कौन, इस पर चैलेंज कर देता है। मैं क्या हूँ, मेरा शरीर है या मेरा आत्मा है या मेरा रंग है, ये सवाल पैदा कर देता है। ये हमारे इतिहास के प्रारंभ से ये परंपरा हमारे यहाँ चली आई है। तो इसलिए भारत का जो चित्त और मानस है वो इस परंपरा से निकला हुआ है, वो एक महान यात्रा से निकला हुआ है, वैचारिक यात्रा में से निकला हुआ है, दार्शनिक स्थापनाओं में से निकला हुआ है, और एक दूसरे के साथ संवाद करके निकला हुआ है, विमर्श करके निकला हुआ है, और उस विमर्श को उसने निरंतर आगे बढ़ाया है। वो नेति नहीं कहा कि यहाँ समाप्त होगा, नहीं, उसने अभी और भी है, इसके आगे भी जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी मुख्य बात है भारत के मानस में, जिसने इसका निर्माण किया है। वो ये है कि क्या बात है, अच्छा आज यहाँ खड़े हैं, कभी तो आगे जाना है। यहाँ आज बात खत्म होती है नहीं, कल फिर शुरू होगी, ये तो चलेगी, ये बंद नहीं होती। तो ये जो भारतीय मानस की एक विशेषता है, परंपरागत विशेषता है, आज की भाषा में जिसको हम कहें कि जेनेटिक उसकी एक आंतरिक रचना है, तो मैं ऐसा मानता हूँ। और इस बात को समझने की जरूरत है, इसकी तरफ हमारे धर्मपाल जी ने बहुत ही उत्तम तरीके से हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि पहले आप ये तो समझ लो कि आप आए कहाँ से हो, जा कहाँ रहे हो, क्या क्या आपके मानस को बनाने वाली
आपकी चित्त की कौन सी ऐशाएं हैं जिसने आपको यहाँ लाकर खड़ा किया है। ये चित्त, ये मानस एक दिन में नहीं बना है, ये हजारों लाखों साल से, अगर हम अपने इतिहास के शब्दों में कहें तो उससे निर्माण हुआ है। और वो इसलिए एक हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। अगर हम इसे नहीं समझते तो स्वाभाविक है हम इस अपने देश के मूर्धन्य लोगों की, ऋषियों की, मुनियों की, सबकी तपस्या को एक तरह से हम खारिज कर देते हैं अगर हम इस अपने मानस की रचना को नहीं जानते। इसलिए मैं इस पुस्तक को, जो विशेष को, जिसको अंत में यद्यपि जिसके बारे में चिंता की गई है, मैं इसको उनके महत्वपूर्ण ग्रंथों में शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ। वैज्ञानिक ग्रंथ है, उसमें तो जो कुछ है, दृश्य है, जो खुला है या तो लिखा है या किसी पुस्तक में बंद है या किसी उसमें म्यूजियम में बंद है, किसी के अभिलेखागार में बंद है, निकाला जा सकता है। वो एक भौतिक तथ्य है। लेकिन उस भौतिक तथ्य को, उस पक्ष को भारतीय मानस के किस वृद्धि से उसका परिपाक हुआ है। ये परिपाक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है हमारी सभ्यता में। परिपाक पकता रहेगा, बढ़ता रहेगा। उसको आप जिसको कहते हैं निरंतर, उसका पाक करते रहेंगे, उसको और अच्छी तरह से उसको पकाते रहेंगे ताकि आपके सारे जीवन में, सब स्थानों में, विचार में, व्यवहार में, सब जगह वो परिपक्व हो जाए। तो इसलिए ये जो पुस्तक का महत्व है, ये समूचे भारत को, भारत की आत्मा को, भारत की दृष्टि को और भारत के हजारों साल के अनुभवों का निचोड़ है। और इसलिए उन्होंने आग्रह किया है कि इसको समझना जरूरी है। और दूसरी बात जो उन्होंने की इसमें कि इसको आप जरूर करिए, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि जो भारत की काल और के बारे में धारणा है, जो चित्त और मानस के साथ जो काल के प्रवाह से वो बना है, आप उसको भी समझिए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी चर्चा में आई थी कि हमारी काल की अवधारणा लीनियर नहीं है, रेखिल नहीं है, वो वृत्ताकार है, वो चलती रहती है। वो एक, जिसको हम कहते हैं अखंड मंडलाकार है। खाली एक मंडली नहीं, अखंड मंडलाकार है, स्पाइरल है, चलता रहता है, बिंदु से चलता रहता है, आगे तक चलता रहता है। स्पाइरल जो है वो दूर तक जाएगा, ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक जाएगा। इसलिए ये भारत का जो चित्त मानस काल है, इसको समझना, ये मैं समझता हूँ आज की दृष्टि से हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना उस गहन तत्व को जाने हुए हम आगे का अपना कोई भी कदम नहीं रख सकते। हम अपनी परंपरा, अपने प्रवाह से कभी भी नहीं जुड़ सकेंगे। तो इसलिए मैं इस पुस्तक का तो बहुत ही अधिक अवलोकन करने के लिए, बार बार पठन करने के लिए आग्रह करूंगा। दूसरी बात है वो ये कि जो हमारे देश में तकनीकी और इसका विकास हुआ, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो बात बार बार कही गई कि हमें ये तकनीकी हमारे देश में क्यों विकसित हुई और देशों में किस ढंग से विकसित हुई, इसका क्या रहस्य है। मेरा अपना अनुभव यह है कि हमारी जो दृष्टि है वो प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखने की है। हमारे सारे कार्य व्यापार, अगर आप भारत की दृष्टि को देखेंगे तो वो प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम प्रकृति के ही अंश हैं, प्रकृति ही हैं हम एक प्रकार से। इसलिए जो कुछ प्रकृति में होता है वो हमें ग्राह्य है, जो प्रकृति विरुद्ध है वो हमें ग्राह्य नहीं है। ये हमारे चिंतन की एक विशेषता है। अगर आप गौर से देखेंगे, इसलिए हमारी जो भी तकनीकी है उसने प्रकृति का खंडन नहीं किया, प्रकृति का विरोध नहीं किया, प्रकृति का निषेध नहीं किया, उसने प्रकृति से ग्रहण किया है तो प्रकृति को प्रदान भी किया। जो आज हम सारे विश्व के सामने जो एक ये संकट देख रहे हैं, जिसको आजकल एग्जिस्टेंशियल वो कहा जाता है, संकट कहा जाता है कि क्या होगा, पर्यावरण का क्या होगा, हमारे ग्रोथ का क्या होगा, सारी हमारी इन व्यवस्थाओं का क्या होगा, तो स्वाभाविक रूप में उसका निदान हमारे पास है। हमने कहा हाँ है, क्योंकि हम तो
प्रकृति के बालक हैं, हम प्रकृति से पैदा हुए हैं, इसलिए हमारा संबंध प्रकृति से माता और पुत्र का है। हमने अपने जीवन में भी कहा कि माता भूमि पुत्रो पृथ्वी हम, लेकिन इसको हमने बड़े फलक पर भी देखा है कि इस सारी पृथ्वी में और हम में माता पुत्र का संबंध है, एकात्मता का संबंध है। इसलिए आप अपनी माँ से दूध ले सकते हैं, दुग्धपान कर सकते हैं, लेकिन माँ का रक्त नहीं चूस सकते। वहीं तक आप माता से पोषण पाएंगे जहां तक कि आप माता को नष्ट नहीं करेंगे, माता को परेशान नहीं करेंगे, उसका रक्त न चूसेंगे। इसलिए पोषण प्राप्त कीजिए पर शोषण नहीं कीजिए। तो ये जो एक विशेष दृष्टि है प्रकृति को देखने की, और प्रकृति से कितना लेना और कितना किस हद तक लेना और कब लेना, ये इसमें से पैदा होती। और फिर जैसे अपनी माँ की सेवा भी करने की बात हमको आती है ना, तो हमने ये भी कहा कि भाई प्रकृति ने दे दिया है ना, आप प्रकृति को भी देना। इसलिए जितना लिया है अगर उतना नहीं दे सकते तो कुछ तो प्रदान करें। प्रकृति का खजाना कभी भी रिक्त न होने पाए, ये एक दृष्टि थी। इस दृष्टि से बहुत सी रचनाएं हुई, और उन रचनाओं को आप देखेंगे, हमारे आयुर्वेद में देखेंगे, आप हमारे जीवन की पद्धति में देखेंगे, हमारी आश्रम व्यवस्था में देखेंगे, हमारे पारिवारिक संबंधों में देखेंगे, हमारे वैश्विक संबंधों में देखेंगे। और इस प्रकार हम एक बड़े संसार का विकास करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, जो आज की तकनीकी और आज की व्यवस्था के साथ मेल नहीं खाता है, क्योंकि वो शोषण पर आधारित है, वो स्वार्थ पर आधारित है, वो प्रकृति को माँ नहीं मानती है, बल्कि प्रकृति को एक निर्जीव तत्व मानकर उसमें से जितना चाहे उतना लेने की बात, और अपने व्यक्तिगत शोषण के लिए जितना से अधिक से भी अधिक जरूरत हो उसको लेना चाहिए, मोर एंड मोर एंड मोर। हमारे यहाँ ये नहीं है। तो हमारी जो दृष्टि है इन सारी चीज़ों में, आप हमारी तकनीकी को देखेंगे तो भी, हमारी विचार परंपरा को देखेंगे तो भी, हमारी अर्थव्यवस्थाओं को देखेंगे तो भी, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को देखेंगे तो भी, राज्य व्यवस्था को देखेंगे तो भी, विशाल विशाल साहित्य है इसके ऊपर, सब इसी में से निश्चित होता है। और हमारे धर्मपाल जी ने इस बात को जितनी गहराई से जानकर हमें समझाया है, और अंत में जो बात कही है, जो आखिर में शायद या तो उन्होंने, आपने कही है, किसने कही, कि उनका जो अंतिम पैरा है जिसमें वो ये भी हमको बताते हैं कि आपके इस देश की काल की अवधारणा, इसके चित्त और मानस की अवधारणा, ये हमारे देश के ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले स्थापित की थी। हमको बता दिया था मार्ग उन्होंने कि देखो ऐसा है। अब इसमें से हम परिस्थिति के अनुकूल क्या अपने लिए आगे तय करते हैं, विचार करते हैं, किधर जाना चाहते हैं। अब इसमें हम कितने कितने समझदारी से काम करेंगे ये तो अलग बात है, पर उन्होंने रास्ता बता दिया है। और उन्होंने उसमें ये भी बता दिया है, उस दृष्टि से आप देखेंगे कि इस सारे तत्व में से एक चीज निकलती है जिसको हम धर्म के नाम से पुकार सकते हैं। ये जो विश्व धर्म है, प्रकृति धर्म है, मानव धर्म है, जितने भी ये व्यवस्था के संबंध में जितने भी ये सारे प्रकार और व्यवस्थाओं के रूप हैं वो प्रकट होते हैं। और इसलिए ये धर्म को भी जानना, उसके बारे में समझना और उसके नियामक रूप को समझना, नियंत्रक रूप नहीं है, नियामक रूप है। तो ये जो एक विशेष बात उन्होंने हमारे सामने रखी, मैं ऐसा समझता हूँ कि उनके सारे मंथन का ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो पहलू है। और एक बात कह के समाप्त करूँगा कि हमें ये भी याद रखना चाहिए, आधुनिक विज्ञान भारतीय जीवन के अनेक पहलुओं को स्वीकार कर रहा है। जैसे आजकल हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कहते हैं, हमारे श्रीनिवास जी उसके बहुत अधिक विख्यात ज्ञाता है। हमारे बजाज भी फिजिक्स के ही वो छात्र रहे हैं, और इत्तेफाक से मैं भी फिजिक्स का ही छात्र रहा हूँ। तो बल्कि कई बार मैं बताता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं, उन सब का उद्गम कहीं ना कहीं फिजिक्स के अंदर निकला हुआ था। तो खैर, लेकिन उसमें देखेंगे आप
कि अब ये कहा जा रहा है कि जो आधुनिक विज्ञान का सूत्रपात करने वाले वैज्ञानिकों में से एडविन श्रोडिंगर और हेजनबर्ग, उनके जरा कथनों पर विचार कीजिए। श्रोडिंगर कहते हैं कि ये जो कुछ है ये तो वही है जो हिंदू पंडित कहता है तत्वमसी, और जो कुछ है इसके अलावा वो तो माया है, केवल जो तत्व है वही। और उन्होंने कहा कि एट द कॉस्ट ऑफ ब्लेस्फेमी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा संसार माया है, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से तो ये बात बैठती नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ ब्लेस्फेमी मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये तत्वमसी वाला जो तत्व है यही सच है। और मेरा जो एक विज्ञान को समझने का एक दृष्टिकोण है वो भी इसमें से पैदा होता है। और साथ ही हमारे श्रोडिंगर महोदय कहते हैं कि दृष्टा और दृश्य में अगर भेद है तो एक दूसरे को आप नहीं समझ सकते हैं। दृष्टा और दृश्य का भेद समाप्त होना चाहिए, अदरवाइज यू डोंट अंडरस्टैंड। जो आपको वास्तविकता का पता नहीं चलता, यथार्थ को पता नहीं चलता। और आइंस्टाइन को भी एक बार ये कहना पड़ा कि हाँ, हम वैज्ञानिक जिस नज़रिए से यथार्थ को, यानी फिजिकल यथार्थ को देख रहे हैं, भौतिक यथार्थ को, वो हमें बदलना पड़ेगा। तो ये बात जो है हमको समझने की है कि हमारा जो चित्त मानस काल बना है वो कितना गहराई से बना था, कब से बना था, उसके लिए कितने लोगों ने साधना की, तपस्या की, उसको व्यवहार में लाया और बताया कि भाई ऐसे चलो, यही चलना है, इसी प्रकार से चलना है। अगर आपको अपने को समझना है, किसी समाज को समझना है, विश्व को समझना है, तो इस चित्त मानस काल की जो प्रहेलिका है उसको समझने की ज़रूरत और उसको सुलझाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इस रूप में ये जो गोष्ठी है इसका जो एक व्यापक दार्शनिक रूप है, जो विश्व कल्याण के लिए भी उतना ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा जितना कि एक भारत के लिए, क्योंकि ये किसी भी एक डॉगमा से पैदा नहीं हुआ है, ये किसी एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण से पैदा नहीं हुआ है, ये एक सम्यक दृष्टिकोण से पैदा हुआ है, ये एक सामंजस्य करने वाले दृष्टि से पैदा हुआ है। और इस चित्त मानस और काल को हम समझें और उसका अनुशीलन करें और उसको और अधिक गहराई के साथ जानें और बताएं। मैं समझता हूँ आज आपकी इस गोष्ठी का जो मेरे मन पर प्रभाव पड़ा है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बुलाया और सारे विद्वानों का विचार और उनके अध्ययन को सुनने का मुझे बहुत मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इसके लिए मैं बजाज जी को और अन्य सभी प्रतिभागियों को और विशेषकर गीता जी को जो यहाँ से आई और हुआ, और प्रोफेसर को जो अमेरिका में बैठ कर के भी हमारे सिद्धांतों का अनुशीलन कर रहे हैं। तो ये सब महत्व की बातें हो रही हैं और मेरा ऐसा विश्वास है कि बीज छोटा ही होता है लेकिन लग जाता है तो बड़ा वृक्ष हो जाता है। और शायद ये ऐसा वृक्ष बनेगा कि जिसकी छाया में न केवल भारत बल्कि विश्व को संत्रास से मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुरली मनोहर जोशी जी। आपके इस उद्बोधन के साथ आज की ये सुदीर्घ गोष्ठी संपन्न होती है। हम सबका, वक्ताओं का और श्रोताओं का, हम सभी अभिनंदन के पात्र हैं कि धर्मपाल जी की 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर हम सब इतने लंबे समय तक मिलकर बैठे, उनके कहे पर विचार किया, चिंतन मनन किया। इससे बड़ा सौभाग्य हम सबका नहीं हो सकता था। अब मैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वो फॉर्मल औपचारिक वोट ऑफ थैंक्स आईआईएमसी की ओर से भी और सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज की ओर से भी प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर बजाज जी। समय काफी हो गया है, 6:20 हो गए हैं
और मैं देख रहा हूं आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी लगभग 5 घंटे से लगातार हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरक है और जो उनके शब्द हैं वो हमारे लिए मार्गदर्शन है, और निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। हम सब आगे मिलकर धर्मपाल जी के विचार को और भारत बोध को, भारतीयता को, भारतीय दृष्टि को जिसका आपने जिक्र किया है उसे आगे ले जाने का गंभीर प्रयास करेंगे। Basically, I don't have words to reinterpret the mesmerizing thoughts expressed by all the eminent scholars who have joined this discussion today. This seminar is indeed a rare opportunity to listen to such a galaxy of scholars from across the world. We listened to eminent scholar Murli Manohar Joshi ji, whose thoughts are always motivation for to all the modern scholars. Thank you, sir, for sparing almost 5 hours for this seminar and blessing us. On behalf of the IIMC and also the Center for Policy Studies, I express my sincere thanks to Professor Francis X. Clooney, who joined from Harvard University. So early morning there. Professor K. Vijay Raghavan ji, Shri Ram Bahadur Rai ji, who is also sitting for almost 3-4 I think almost 5 hours he's sitting. Dr. Shri S. Gurumurthy ji, editor Tughlaq, who joined from Chennai. Professor M.D. Srinivas, who is chairman of Center for Policy Studies. Professor Geeta Dharampal ji, Professor Ashok Jhunjhunwala ji, Professor M.K. Sridhar ji, Shri T. M. Mukundan ji, Shri Pawan Gupta ji, and Professor K.V. Vardarajan ji. I hope the IIMC will continue to enjoy our blessings and guidance in future also. Lot of eminent personalities and scholars have joined this discussion from across the country. I noticed the presence of Professor Kripashankar Chobe ji from Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalaya Wardha. I could also notice Professor Rajkumar Bhatia ji from University, and lot of eminent scholars joined this discussion. I also express my sincere thanks to Professor Sanjay Dwivedi ji, DG IIMC, for motivating us to organize this seminar in association with the Center for Policy Studies. And Professor Sanjay Dwivedi is definitely strength behind all such activities in IIMC. I also thank all the faculty members from IIMC who joined this seminar. Professor Sangeeta Panavendra ji, who started this seminar, Professor Anand Pradhan ji, Professor Shashwati Goswami, Professor Anil Kumar Soumitra, who is RD of our Amravati campus, Dr. Anil Kumar Vadavathur. I could see him now also. He is the regional director of our Kottayam campus, Professor V.K. Bharti, Dr. Rinku Pegu, and all other faculty members. Thank you, Center for Policy Studies, particularly Professor Dr. M.D. Srinivasi, Dr. J.K. Bajaj for joining the IIMC for organizing this wonderful discussion. Definitely our team, IT team, Sagar Goswami and Sanjeev, they have ensured interruption free, basically very good support they have provided, IT support, and also our social media team, including Ankur Vijay Vargiya, Amrita Puranjay, and all the academic associate and all our students and all the scholars who have joined this seminar from different parts of the country. Many thanks to Professor Sangeeta Panavendra ji and Dr. J.K. Bajaj sahab for moderating different sessions of this seminar. We have started work for the compilation of all these species in a book form, and I think the book will be in your hands within a month. Thank you very much. Thank you, everyone. Namaskar. Thank you, sir. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukha Bhave. Om Shanti Shanti.